Assalamu alaikum viewers and students. This is Muhammad Imran Murtaza from Anglophile English Learning Center. Students kept asking me questions about B and B. They wanted to learn the difference between B and B. So before I start my class, I just would like to let you know that I have already taught about B, and if you want to learn that, you should see my third episode. You will be able to learn about B in detail. Okay, now here I'm describing you the difference between B and B. As you see here, B is MR. B represents is MR. B means is MR. So you must remember this. Whenever we make sentence, we follow is MR. We use is MR to represent B. Okay. Now here, B talks about personality. If I talk about my personality, that what kind of person I am, I'll have to use the word B. I mean is MR. If I say I am quiet, it means that this is my personality. I am not talkative. I always remain quiet. I don't approach the people. I'm a quiet personality. So we say the word, the sentence, I am quiet. On the other hand, if you talk about being, being, okay, we use being with is MR to talk about present continuous tense, present progressive tense. We call it present progressive. So we use being and then adjective. It means that I am pretending to be something that I am not actually. Okay, so here I just talk you about I am quiet, she is quiet. Here we are talking about my personality and her personality. On the other hand, if I talk about I am being quiet, it means that I am not a quiet guy. I am talkative, but here because of some reason I am pretending to be quiet. I hope you understand my point. It means my personality is not quiet here. Okay, I'm a talkative guy, but here being quiet, it means that it's my behavior. I'm doing it for the temporary time. Okay, it means that I am not a quiet person. I am talkative, but here because of some reason I'm trying to be quiet. It means I'm being quiet. Now see the next sentence. He is naughty. It means that that guy is naughty. He is his personality is naughty. He does lots of naughty things. He disturbs people, and that's how his personality is. On the other hand, if I say that he's being naughty, it means that he is a sober person. He is not someone who does something bad with everyone. Here, he's being naughty. It means that for the time being, he's pretending to be naughty. Actually, his personality is not naughty. Okay, do you understand my point? It is his temporary behavior. The third one, Sammy is polite. It means that Sammy is the guy who doesn't misbehave with anyone. He is always polite. He is very humble, okay, with everyone. And that is why we are talking about what? We are saying what? He is polite. It means this is his what? This is his personality. On the other hand, if I say Sammy is being quiet or Sammy is being polite, it means that this guy is actually not polite. He is somehow impolite guy. He does lots of he misbehaves with the people. But here, for the time being, he is being polite. Okay, it means that his personality is. If his personality is polite, then he is polite, and his behavior, he is behaving for the limited time. For some time, he is being polite. It means that his personality is not polite. He's behaving that he is polite at present, but actually he is naughty or he is impolite. I hope you understand the difference between be and being. Okay, now let me explain you something in Urdu, because students of mine have been demanding that I should be speaking Urdu for that so that they'll be able to understand me. अच्छा, उनके लिए जो लोग जिनको इंग्लिश पूरी समझ में नहीं आती है वो समझ लें बी और बीइंग में जो फर्क है वो काफी ज्यादा है। बी का मतलब ये आपकी बात करता है आपकी पर्सनालिटी की, आपकी शख्सियत की। सर अगर मैं कहता हूँ आई एम क्वाइट, इसका मतलब है मैं खामोश तबीयत का इंसान हूँ, ठीक है, और मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करता, तो ये मेरी खामोश तबीयत की बात कर रहा है आई एम क्वाइट। तो उस वक्त हम लोग बी बोलेंगे, ए समान बोलेंगे आई एम क्वाइट। जबकि अगर आप बात करते हैं कोई ऐसा शख्स जो कि बहुत ज्यादा बातूनी है, लेकिन वक्ती तौर पे किसी भी वजह से वो अपने आप को खामोश तबीयत जाहिर कर रहा है, लेकिन वो खामोश है नहीं, उसकी तबीयत खामोश है नहीं, वो अभी खामोश अपने आप को जाहिर कर रहा है, तो फिर हम वहां लगाएंगे बीइंग।
he is being quiet, she is being quiet। इसका मतलब ये हो गया वो खामोश तबीयत है नहीं, वो बहुत बातूनी है, लेकिन इस वक्त किसी भी वजह से वो अपने आप को खामोश बन रही है, मगर वो खामोश है नहीं। इसी तरह he is naughty, वो शरारती है, इसका मतलब है उसकी जो शख्सियत है वो शरारत करने वाली है। जबकि दूसरी तरफ आप देखते हैं he is being naughty, इसका मतलब वो एक सीरियस बच्चा है, लेकिन अभी वो अपने आप को शरारती पोज कर रहा है, दिखा रहा है कि मैं शरारती हूं, लेकिन एक्चुअली वो शरारती है नहीं। ओके इस तरह सैमी इज पोलाइट, सैमी जो है एक ऐसा बंदा है जो बहुत ही पोलाइट है, लोगों से बदतमीजी नहीं करता, लोगों से बड़ी प्यार से बात करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ सैमी इज बीइंग पोलाइट या सैमी इज बीइंग क्वाइट, अगर मैं इसको बीइंग पोलाइट बोलता हूँ, इसका मतलब है वो अपने आप को पोलाइट बन रहा है, लेकिन वो पोलाइट है नहीं, एक्चुअली वो है बदतमीज, वो इम्पोलाइट है। लेकिन इस वक्त किसी भी वजह से अब्बू बैठे हैं, अम्मी बैठी, कोई भी किसी भी वजह से वो अपने आप को ये पोस्ट कर रहा है कि वो पोलाइट इंसान है या वो खामोश इंसान है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप यकीन मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको नंबर यहाँ ऑलरेडी लिखा है, मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको यकीनन इसका जवाब दूंगा। अच्छा, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा कि इसमें कुछ एक्सरसाइज है, आप देखें इसको, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आप इसको मुझे या कमेंट बॉक्स में भेजेंगे या आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। बेहतर है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करें तो मैं आपको वहां इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं कि डिफरेंस जो है बी और बीइंग में क्या है। बी का मतलब है वो आपकी शख्सियत को बयान करता है, और बीइंग एडजेक्टिव का मतलब है आपकी शख्सियत वो नहीं है जो अब आप दिखा रहे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसका जवाब भी देंगे, और अगले वक्त के लिए आपको मैं अल्लाह हाफ़िज़ करता हूँ। नाउ इन इंग्लिश, of course, like you must have understood the difference between be and being. Now before leaving, I would like to let you know that whatever like I've given you these exercises, you must try to solve this and send it in the comment box so that I'll be able to solve it. Or if you have any problem, you can WhatsApp me. In the previous slide, I've got my WhatsApp number. You can WhatsApp me. I'll definitely answer you. Thank you very much, and till next time, Allah Hafiz.